Hello students, I am teaching you Python. This is chapter 5, data file handling. In this data file handling, we have done already some functions in part 1. Now this video is part 2. So in first part, we have done how to open a file, a data file, how to close a data file. And if you want to read some data, then read function was used to read data. Okay, and while opening, what are the modes available to open a file, वो भी हमने वीडियो नंबर 1 में किया था. Now in the second video we will do writing onto the file. So अब हम डेटा को write करना means we are sending output to a data file. इसमें हम ये सीखेंगे. After working with file reading functions, let's talk about file writing function. So writing function कौन से हैं उनको हम समझते हैं. Like reading function, the writing function also work on open file. तो जितने भी functions हैं वो सभी open file पे work करेंगे, closed file पे तो कोई भी function work नहीं करेगा. Okay, file handle or object is required to open a file. So what are the functions for writing? See, first one is write. This function is used as object name dot write and string. Now this string will be written in the file with which this object is connected. So write string str1 to a file referred by the file object or file handle. Open करते टाइम तुमने file handle use किया होगा. File write lines. So here write lines is file dot write lines. Means all the lines written in the list L. L is a list here. In the function, L is a list here. All the lines written in this list will go to the file itself and the hard disk will save that permanently. So in this way, two functions are available in Python for writing data into the file. Next thing is appending a file. Now appending or writing both are same thing. The only difference is while writing it will overwrite the data and new data will be written on it. But appending means जो already data written है that should not be deleted, more data should be added at end. तो उसके अलग अलग मोड है ओपन करने के. W is the mode to open a file in writing mode and A is the mode to open the file in append mode. If you have opened file in append mode means you want to write more data and already existing data should not be deleted. Okay, so these modes we have done in previous video. Let's understand. That means in Python, writing a file can take place in the following format. 1. In an existing file, while retaining its contents. If the file has been opened in append mode, the data, the old contents will remain in that. It will not be deleted. It will retain that. If the file has been opened in R plus or A plus mode, then also the same data will retain as it is, but you can do reading and writing both. Okay. Next is to create a new file or to write onto an existing file. Means if you will open a file in W mode or W plus mode, then always a new file will be opened. Means if data is already there, it will be deleted. तो पिछले वाले में क्या था, हमने append mode में open किया था. ये देखो, if you are opening it in read mode or append mode or append plus mode, see A, R or A plus. In these three cases, data which is already there in the file will remain in the file. It will not be deleted. More data will be added. But W or W plus, these are writing mode. Old data will be deleted before you write the new data. Okay, so you have to take care of this thing कि तुम्हें पुराना data delete करना है या उसको भी रखना है. So depending upon that situation, you can open the file and then close the file. It will remain same. So opening a file, closing a file will remain same. Only writing data we're talking about. So with the help of many examples, many code snippets, we will understand how to use all these functions, write functions, append functions, etc. First is create a file to hold some data. File out is an object. File object या file handle. Open student.dat. This is the file. We are opening it in writing mode. तो क्या होगा? It will create a new file student.dat. और अगर already file है तो it will delete the data, erase the data and it will open it as a new file only.
For I in range 5 means the loop 5 times chalega. These two lines will be executed 5 times. Okay, now 5 times what will happen? Name is equal to input enter name of the student. Okay, file out dot write name. तो एक नाम फाइल में चला जाएगा. Again this loop will work. Again enter your name, again enter name of the student again. Then file dot write second name, फिर enter चला जाएगा. Again it will work. So 5 times these two lines will execute. So 5 names will go in the file. Which file? Student dot get, and then file dot close. If you will open this file, you will see that 5 names are written in this file. You can open it in Notepad only. You can see the file. Because it is text file, you can open it in Notepad and you will see these 5 names available in that file. Now you can see the file created in the same folder where this Python script program is saved. However, if you want to create the file in a specific folder, then you must specify the path also. अगर same current directory में save नहीं करना तो आपको path देना होगा, and you can open this in Notepad. Okay, see this is open and these 5 names are written. Okay, let's continue. Now next code snippet 9. Create a file to hold some data separated as lines. Okay, because in the previous there was no new lines, all the names were in one line only. See, okay, now we want to do the same thing again, but this time we want to write these names separately. File out, open the file student1.txt in writing mode. Again 5 times loop is working, so these 3 lines will work how many times? 5 times. 5 times. Okay, name is equal to input enter name of the student. File out dot write name, एक name चला जाएगा. Then new line symbol will go. Then again enter name of student, second name, फिर वो name भी input हो जाएगा. And then again new line symbol. So backslash n is separating all the names with a new line character. Backslash n is a new line character and it will separate all the names in different lines. And after 5 times, close the file. In this way, see, now all the names are not in the horizontal but vertical column. Every time there is a new line character. New line character, you can say enter. From keyboard, you can press enter to go to the next line. Okay. Next is code snippet number 10. Create a file with some names separated by a new line character without using write function. हमने write function use नहीं करना. तो दो ही function है, एक write function है, एक write lines function है. तो to write data in a file, there are two functions, write functions and write line function. तो write use नहीं करने के लिए कहा, इसलिए हम write lines use करेंगे. For this, we shall use write line in place of write function, which writes the contents of a list. अभी तक हम क्या कर रहे थे? String write कर रहे थे. अब हम एक list contains a number of strings. So all the lines written in the list as a list item will be written simultaneously. सारी इकट्ठी देखो कैसे होगा. File out is equal to open student3.txt. हमने student3.txt को writing mode में open किया. Now list1 is equal to blank list. For I in range 5, this loop will work 5 times. This is working 5 times. These 2 lines only. Name is equal to input enter name of the student. List1 dot append name and then backslash n. Then input next name, list1 dot append third name, list1 dot append. In this way it will work 5 times. After the loop is over, file out dot write lines, this is list. Okay, the complete list will be entered and file out dot close. So the file will contain these 5 names. These are the list items. Okay, in this way we can write the complete list at a time using write line function. Using write function you can write one by one, but using write lines you can write all the lines together. Next program, let's see. This is program number 5.3. What we have left,
let's see this. Okay, this output I have explained you. Now write a program to get roll number, name and marks of students of a class, enter from keyboard, okay, and store these detail in for file called marks.dat. तो फाइल नेम हमें ये फाइल ओपन करनी है और इसमें स्टूडेंट की डिटेल राइट करनी है. वी वांट टू राइट दिस डिटेल ऑफ द स्टूडेंट. Count is equal to enter input how many students are there in the class. File out open marks.dat dot writing. This is in writing mode. तो हमने पहले count ले लिया how many students are there in the class. Suppose I am entering 5 or 7 or 20. So whatever the number you will enter, these many times this count will contain. Means count contains the number. Okay. For I in range, for I in range count. Count is suppose 7, then 7 times it will work. Count is suppose 3, then 3 times it will work. So this loop will work according to the count. Print enter detail of the student. Which student? I is initially 0, so it will be first student. Then I will become 1, it will become second student. In this way, 0, 1, 2, 3, 4, counting of list always start from 0. Okay. So, roll number is equal to int input roll number, name is equal to input name, marks is equal to float input marks. In this way, 3 variables we have entered. And record is a string. In this string, we want to convert roll number as a string. Name is already a string, no need to convert. And marks as a string. And all these three strings are means string 1 plus string 2 plus string 3. This is converted roll number. This is already a name which is string. This is a float. In this way, concatenation of 3 string will become a string only. That string is record. Okay, so record contain a big string with roll number, name and marks. Now file out dot write record. एक record written means one line is written. After that, this loop will work how many times? 7 times. So all 7 times this line will write one record at a time. Okay, so what will happen? See. This is the input, roll number, name, marks, again roll number, name, marks. In this way, you 7 times you will do all this, and in this way it will be written. Okay, because we have written comma to separate the variable and backslash n for every record. This is for new line. This is to separate the variables. Comma is to separate the variable and backslash n is for new line. So 7 records or 5 records, whatever the number you will give. Here it is given 3, so 3 records are taken. If you carefully notice, we have created comma separated values in one student's record while writing in a file. So we can say that the file created by program 5.4 is CSV, comma separated values. It can be comma separated value, it can be space separated value, it can be tab separated value or any symbol, it can be pipe separated value. तो ये हम बाद में करेंगे, बाइनरी फाइल में इसको और डिटेल में करेंगे. अभी के लिए आगे चलते हैं. प्रोग्राम नंबर 5.4, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 more student detail. उसी फाइल में जहां हमने 3 ऐड किए थे, 2 more detail we want to add, records, 2 more records. File out is equal to open marks.dat append mode. क्योंकि अगर हम इसको राइट मोड में ओपन करेंगे तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा. I don't want to lose the data. That's why I'm opening it in append mode, A mode. Okay. For I in range 2 means it will work 2 times. So all these lines will work 2 times. Print enter detail of student. Now roll number, name, marks. Record is equal to concatenation of 3 strings. Same. File dot write record. Record enter किया, again it will go to this place. 2 times it will work. 2 records will be added in the file. That file out dot close. तो क्या होगा? Earlier 3 things were there. 1, 2, 3. Now 2 more are added into it. Okay. In this way, this program will contain this file, this data. Write a program to display the content of file marks.dat. Create
through program created through program 5.3 and 5.4 means now we want to read the data एंड डिस्प्ले के हमने 5.3 और 5.4 में जो डाटा लिखा 3 रिकॉर्ड्स हमने इसमें लिखे थे और 2 रिकॉर्ड्स हमने यहाँ लिखे थे टोटल 5 रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल वी वांट टू डिस्प्ले दैट फाइल init is equal to open marks that reading mode. Now we are opening it in reading mode. While string is equal to file input or init dot read line. Only one write line क्योंकि हमने बैकस्लैश डाला था ना हर लाइन के एंड में हमने क्या डाला है रिकॉर्ड के लाइन में एंड में बैकस्लैश डाला so बैकस्लैश represent a new line so it will read the line then it will print then again it will read a line again it will print so how many times it will work जब तक string में contents आते रहेंगे ये read करता रहेगा when end of file will come then data in string will be empty null जब null आ जाएगा then this loop will get over means first record आएगा it will display it second record it will display it but after last record what will come null pointer will come null pointer is just like end of file pointer this end of file pointer will indicate while loop should be stopped now as soon as the while loop stopped file init dot close file close in this way it will display this output okay. All 5 records will be displayed so let's continue this was writing now new thing is the flush function after writing function after reading function after appending function we know it is compulsory to store the data in the file permanently और फिर flush का क्या काम है the flush function is helping us to store permanently immediately means जब हम कोई भी writing करते हैं किसी फाइल में तो कंपाइलर उस writing part को pending छोड़ देता है pending means in RAM it is updated in memory it is updated but in hard disk it will be updated while closing the file but at the time of closing the file maybe we are writing data into the file after 20 minutes we will close that file तो क्या होगा 20 मिनट तक डाटा किस में रहेगा मेमोरी में रहेगा रैम में रहेगा इन बिटवीन अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया या लाइट चली गई तो क्या होगा डाटा कैन लॉस so flush function allow you to save the data right now means as soon as you write data into the file it will be written in the memory after memory you want to save it permanently in the hard disk you can use object name means file name dot flush function it is used to save data on the spot or whenever programmer need anytime when programmer want to save the data तो अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या किया है फाइल ओपन राइट डेटा अभी हमने फाइल क्लोज नहीं की वी आर अगेन डूइंग सम मोर राइट डेटा सो इंस्टेड ऑफ ऑल 6 फाइल्स आर रिटन नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज हियर तो अगर हमने ये फ्लश फंक्शन यूज नहीं किया है और अगर ये फंक्शन भी यूज नहीं किया तो व्हाट विल हैपन it will permanently save the data while closing the file so 6 lines will be saved even 7 this is also 1 2 3 this is 4 5 and 6 these 6 lines write functions are pending statement at the time of closing Python will save it permanently but what you want that these 3 files should be written and after that if I am writing 3 more lines these will be written and then file should be closed it is for your safety that flush function see what is written here with this statement the string written so far that is the output is and my work status is has been pushed on to the actual file these writing statement string may still be pending okay after this one ये भी रिटर्न हो जाएंगी then file will be closed okay और अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट ना लिखें तो फाइल क्लोजिंग के टाइम भी सब कुछ सेव होगा इन बिटवीन अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया या कुछ एरर कोड एरर आ गया तो आपका डेटा लॉस भी हो सकता है बट फ्लश फाइल इज हेल्पिंग अस टू
escape our program from errors, runtime errors, memory related errors, removing white spaces after reading from file. देखो जैसे हमने वो पोएम वाला प्रोग्राम किया था, in name of the poem there were some blank spaces before the title and after the title. While reading, some new lines were also there, then blank line, then again data was there, then again enter. So what I want to remove the extra blank spaces and extra new line spaces. How to trim? You can say trim or you can say strip the blank spaces from left side of the string, from right side of the string or both side of the string. तो उसके लिए क्या है हमारे पास कुछ व्हाइट स्पेस रिमूव करने के लिए फंक्शंस है। उन फंक्शंस को देखते हैं क्या है। सी है 3 functions are given. The strip function removes the given character from both ends. The rstrip function removes the given character from trailing end only right side. And the lstrip removes the given character from leading end means left side से। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, दोनों साइड से रिमूव कर रहा है, राइट और लेफ्ट एक ही साइड से रिमूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन यूज दिस। ओके, to understand this, consider the following example. See the example. Removing end of line backslash n character from the line reading from the file. fh file header. fh is equal to file poem.txt reading mode. Line is equal to fh.read line, तो एक line read हो जाएगी. But in this line there are spaces left side, right side and new line character also. So line is equal to line dot r strip backslash n. What will happen? Backslash n will be removed from right side. So this line does not contain backslash n, but this line contain backslash n. Okay. So here we have not removed backslash n. In next line we have removed backslash n from the last, from the end. Okay. Let's continue. Removing the leading white spaces from the line read. Okay. Line is equal to file poem.txt read mode read line. तो एक line हमने read कर ली. Line is equal to line dot l strip means left side remove the white spaces. Okay. In this way, the Y, the title of the poem, contains some white spaces in the left side. Those 8 spaces will be removed. Okay. Let's continue. Following lines list the steps that need to be followed in order as mentioned below. The 5 steps to use file in Python program are: determine the file name. Okay, this is a revision basically. We have already done these things in video number 1 and video number 2. Let's revise. Determine the type of file you want to use in your program or project. Then you have to decide if you want to use text file or binary file. Text or binary. Now after deciding, you have to open this text file or binary file in different modes. You need to understand R plus, W plus, append, or which mode you want to open. All these things you have to take decision. After that, open the file and assign its reference to the object. Means make object banana padega. We have to open the file also with the help of that object. We can. Third step is now process. Process is writing and reading or appending data onto the file. तो तीन ही process है. So opening the file, processing it, and then once the process is over, then you can close the file to save it permanently. Or you can use the flush function to save the file, and then ultimately you have to close the file. So this is the complete process of the file handling. Okay, we are talking about only text file till now. We will talk about binary file also. हमने binary file का नहीं किया. More videos you will see for binary file. Text file is understood by you. Significance of file pointer. This is very important task. Suppose this is the data file.
in which you have written 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, because we have written text, तो text तो byte की form में होगा. Okay, character by character it is written. Suppose you are writing read 10. What will happen? Cursor, when you will open the file, the cursor will blink in the beginning of the file. And when you will write read 10, file.read 10, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cursor will come after 10th location. If you will write 5 more, then 11, 12, 13, 14, 15. Means after 5, it will come to the beginning of 16th character or end of 15th character. So reading or writing, in both the cases, cursor move from one byte to another byte. As soon as you will read, it will move towards the reading. Okay, so whenever you will continue reading, it will start reading from the byte, from the character up to which you have already read. तो जहां तक तुमने रीड कर लिया है उसके आगे का रीड करना स्टार्ट करेगा. वंस यू विल क्लोज द फाइल एंड रीओपन इट, फिर वो जीरो लोकेशन पर आ जाएगा. तो जब भी फाइल ओपन होगी तो कर्सर जीरो लोकेशन पे होगा. हाँ, यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, रीड और राइट के केस में कर्सर जीरो लोकेशन से ओपन होता है, बट अपेंड मोड में एंड से ओपन होता है. When you will open a file in append mode, the cursor will go at the end of the file. Okay, so let's see what is written in this point. It is very important point. Significance of the file pointer. Every file maintains a file pointer which tells the current position in the file where the writing or reading will take place. Okay, a file pointer in this context work like a bookmark in the book. Whenever you read something from the file or write into the file, open these two strings. Okay, let's see. ठीक है ना? Open these two things involving the file pointer. This pointer take place at the position of file pointer, and file pointer advances by the specific number of bytes. देखो, जब हमने ओपन किया तो फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में आ गया 0th पोजीशन पर. जब हमने उसको यूज किया, मींस रीड किया या राइट किया, तो एडवांसेस मींस वो मूव करेगा. इट विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन. हम रीड करते जा रहे हैं, वो राइट साइड में मूव करता जा रहा है. हमने 10 कैरेक्टर रीड कर लिए, कर्सर इज मूव्ड 10 बाइट्स. फिर 5 कैरेक्टर और रीड कर लिए, कर्सर विल मूव मोर 5 बाइट्स. तो बाइट बाय बाइट वो मूव करता रहेगा. ओके, फिगर 5.5 illustrate this process. It is important to understand how file pointer work in Python file. This working of Python pointer has been described. Next figure, देखो figure में क्या है. When you are opening a file, तो कर्सर कहाँ पर है? देखो 0th position पे है. This is the arrow. Okay. After reading one character, देखो कर्सर कहाँ पर आ गया? 2nd position पर आ गया. After reading 2 more characters, अब कर्सर कहाँ आ गया? ये देखो. This cursor is not, पहले 1 पर था, फिर 2 more characters are read. 2 plus 1 3. Now it is at the 4th character. In this way cursor is moving according to the read function. जितना रीड करते जाओगे कर्सर आगे मूव करता जाएगा. ठीक है. फाइल मोड्स एंड द ओपनिंग पोजीशन ऑफ द, ये मैंने आपको बता दी कि रीडिंग मोड में बिगिनिंग में आ जाएगा कर्सर. राइटिंग मोड में हमेशा बिगिनिंग में होगा क्योंकि न्यू फाइल ओपन होगी. If data already exists, it will erase that. So in writing mode, cursor is always at 0th location, data is always blank. Reading mode, data blank नहीं होगा लेकिन cursor beginning में ही होगा. इन दोनों beginning में हो गया. This is append mode. Data maintain करेगा, retain करेगा. It will not erase the data, but cursor will be at end. Cursor कहाँ होगा? End position पर होगा. ठीक है. जब हम फाइल ओपन करेंगे, while opening the file, cursor will be at end position. Standard input output. Now, what is standard input output? If someone asks you to give input to a program, तो तुम क्या समझोगे? कीबोर्ड से इनपुट डालना. And someone asks you display something, तो what will you display? आप तो मॉनिटर में डिस्प्ले करोगे. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट तो फाइल हैंडलिंग से नहीं होता, वो कीबोर्ड और मॉनिटर से होता है. ठीक है ना? तो फॉर फाइल there is some library file, library class. लाइब्रेरी में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लासेस हैं, उससे हम क्या हेल्प करते हैं? टू डू इनपुट एंड आउटपुट
in a data file, in a data file. But keyboard और mouse भी Python language, not only Python language, every computer language maintain all the devices as a file. तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कीबोर्ड इज ए फाइल, मॉनिटर इज ए फाइल, हार्ड डिस्क इज ए फाइल, नेटवर्क इज ए फाइल, एनी नेटवर्क करेक्शन इज ए फाइल, ओके, एनी सॉकेट इज ए फाइल, एनी पोर्ट इज ए फाइल. तो अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी we can call a function as a file, so keyboard will work on it. In the same way, using any library function or library, we can display something on the monitor, because monitor is also considered as a file और error के लिए भी एक फाइल है. ठीक है, तो you need to understand what is standard input, what is standard output. देखो एग्जांपल भी दिया यहाँ पर. Do you know internally how these devices are implemented in Python? These standard devices are implemented as a file called standard streams. Okay. In Python, you can use these standard streams file by using system module. ये library module है. This system is a library module in which these three things are there: standard input, standard output, and standard error. Okay, ये सभी किसमें है, सिस्टम मॉड्यूल में. आफ्टर इंपोर्टिंग यू कैन यूज दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर इन द सेम वे. ओके, कैसे यूज करेंगे, देखो, इंटरसेक्टिंग स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड डिवाइसेस एज ए फाइल. अब इसको एज ए फाइल कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ यूज कर रहे हैं. If you import system module in your program, the system dot standard input dot read, ठीक है, तो इसको यूज करके हम इनपुट ले सकते हैं. तो अब तक हम क्या कर रहे थे, रीड फंक्शन यूज कर रहे थे. अब हम रीड को ऐसे भी ले सकते हैं. और अगर आप डिस्प्ले देखना चाहते हो तो प्रिंट कर रहे थे जो काम हम, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट. अब प्रिंट फंक्शन की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मींस मॉनिटर. इफ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन द मॉनिटर, या हम प्रिंट भी तो कर रहे थे ना. अब तक हम क्या कर रहे थे, प्रिंट एक स्ट्रिंग दे रहे थे. तो वही सेम काम सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, दिस फंक्शन विल आल्सो वर्क एज ए प्रिंट स्टेटमेंट. इंपोर्ट सिस्टम fh फाइल हेडर इज इक्वल टू ओपन पोएम डॉट टेक्स्ट. हमने कौन सी फाइल ओपन कर ली, पोएम डॉट टेक्स्ट. लाइन 1 इज इक्वल टू फाइल हेडर डॉट रीड लाइन, एक लाइन रीड की. लाइन 2 इज इक्वल टू फाइल हेडर डॉट रीड लाइन, दूसरी लाइन भी रीड कर ली. नाउ सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट लाइन 1 कहां पे आ जाएगी, मॉनिटर पे आ जाएगी. तो हम प्रिंट भी कर सकते थे, प्रिंट लाइन 1, दिस इज इक्वल टू प्रिंट लाइन 1. ऐसा करेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा. इन द सेम वे दिस वन इज ऑल्सो कम ऑन मॉनिटर. भी हम प्रिंट कर सकते हैं लाइन 2, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड एरर राइट नो एरर अकर्ड. ओके, इन दिस वे वी कैन यूज स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द मॉड्यूल सिस्टम. सिस्टम इज अ मॉड्यूल. ओके, तो ये आउटपुट आ जाएगा. So let's see what is this, Python data files with statement. With statement is very important. This we must understand. Python's with statement is for files is very handy when you have to when we have to related operations such as you have like to execute the pair. तो अब आपको क्या करना है कि there is a pair कौन सा है, पहले फाइल को ओपन करो, फिर प्रोसेस करो एंड देन क्लोज. अब प्रोसेस तो हर बार अलग होगा, लेकिन ओपन और क्लोज ये तो पेयर हुआ ना, कि यू ओपन द फाइल एंड प्रोसेस इट एंड देन क्लोज. अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट मिल जाए कि हमें विद इज स्टेटमेंट, तो हम क्या करेंगे, विद देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, ओनली यू हैव टू राइट द प्रोसेस. देखो कैसे किया हुआ, with open the file name with mode as
ऑब्जेक्ट का नाम, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट करने में ले लिया यहां पर, एंड देन डू द प्रोसेस। अब देखो बाद में क्लोज नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये इंडेंटेशन में जितनी लाइनें होंगी उसके बाद में क्लोज हो जाएगा। जैसे विद ओपन ओपन आउट डॉट टेक्स्ट फाइल इन राइटिंग मोड एज एफ डॉट राइट कर दिया हमने, और जैसे ही एफ डॉट राइट के बाद देखो दिस लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इंडेंटेशन का मतलब है कि दिस लाइन इज अंडर विद, ओके, तो क्या होगा, एज सुन एज दिस लाइन इज ओवर फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस विद स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टरीज ये हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि इफ देयर इज ए ड्राइव, अंडर द ड्राइव देयर आर 3 डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो सकती है, अंडर द डायरेक्टरी देयर आर अगेन 2 मोर डायरेक्टरीज बट 1 फाइल, फोल्डर का हो या डायरेक्टरी का हो, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकते हैं। अंडर दिस फोल्डर देयर आर 2 फाइल्स, अंडर दिस फोल्डर देयर आर 4 फाइल्स, बट फाइल के अंदर फाइल कभी नहीं होती। ओके, तो ये फोल्डर है, इन अंडर द फोल्डर देयर आर 2 फोल्डर्स and this folder again contain 1 more folder, but 2 files are there, this one and this one. So this is the directory structure you need to understand कि हमने C ड्राइव बनाया या E ड्राइव बनाया, E ड्राइव का रूट ड्राइव इसको कहेंगे, E ड्राइव के अंदर हमने ABC कोई फोल्डर बना दिया, ऐसे लिखेंगे हम। इस ABC फोल्डर में हमने एक P फोल्डर भी बना दिया और E ड्राइव के अंदर ही हमने एक Q फोल्डर भी बना दिया, और इसी ई ड्राइव पर हमने एबीसी में हमने कोई एक फाइल बना दी, सपोज a.python py. So how many things ABC folder contain? 3 things, 1 folder P, 1 folder Q and 1 file a.py. Now this folder further contains some more folders or files. तो ऐसे करके ये हायरार्की बनती है। ये हायरार्की हम छोटे क्लासेस में कर लेते हैं जनरली, तो आपको पता ही है कि आप किस किस ड्राइव में, जैसे ई ड्राइव में प्रोजेक्ट है, ई ड्राइव सेल्स है, ये सब ई ड्राइव में 3 फोल्डर्स हैं। इन दिस वे ड्राइव लेटर कोलन देन बैकस्लैश डायरेक्टरी बैकस्लैश डायरेक्टरी बैकस्लैश डायरेक्टरी, जितना मर्जी हम अंदर डायरेक्टरीज बना सकते हैं, फाइल्स भी बना सकते हैं उन डायरेक्टरीज के अंदर। ओके, बट इफ यू वांट टू एक्सेस दैट देन देयर आर 2 मेथड्स। वन मेथड इज गिव द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल, वन मेथड इज दिस। Second method, using single dot you can access the current folder, current directory, current folder, and using double dot you can access the parent directory. तो हमें complete path लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम parent directory को access करना चाहते हैं तो double dot से use कर लेंगे, और करंट डायरेक्टरी को यूज करना चाहते हैं तो डॉट से यूज कर लेंगे, और अगर हमने फिर भी फुल पाथ देना है तो फुल पाथ भी दे सकते हैं हम, कंप्लीट पाथ हर बार भी दे देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बेटर मेथड। ओके, बोथ द मेथड्स आर ओके। सो इन दिस वे वी कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज द एंड हियर। Now 5th chapter is not finished, only text file is finished, some functions of reading, writing, opening, closing are over. Okay, now in the next class we will continue with binary file. So text file is over, binary file. Thank you.